Hello and welcome back to another session by Grey Beyond Narratives. Tonight, the session is about Babri Masjid in India. Today marks the anniversary of Masjid demolition. I'm going to take you back on how it started and everything, and I'm going to give you some history of what exactly happened. So, a large group of activists from the Vishva Hindu Parishad and allied organizations carried out the demolition of the Babri Masjid on 6 December 1992. This 16th century mosque located in Ayodhya, Uttar Pradesh, India, had been at the center of long standing socio political dispute. The mosque was targeted following a political rally organized by Hindu nationalist organization, which escalated into violence. According to Hindu traditions, Ayodhya is believed to be the birthplace of Lord Rama. In the 16th century, a Mughal commander named Mir Baki constructed a mosque known as the Babri Masjid at a site that some Hindu consider to be the birthplace of Rama, known as Ram Janambhumi. The Archaeological Survey of India has stated that the mosque was built on land where a non Islamic structure previously existed. In the 1980s, the Vishva Hindu Parishad initiated a campaign for the construction of temple dedicated to Lord Rama at the disputed site, with the Bharatiya Janata Party (BJP) leading its political support. Numerous rallies and marches were organized as part of the movement, including the Ram Rath Yatra led by L.K. Advani. On 6 December 1992, the VHP and the BJP organized a rally at the disputed site, which attracted around 150,000 participants. Unfortunately, the rally turned violent and the crowd overwhelmed the security forces, resulting in the demolition of the mosque. An inquiry conducted afterward held 68 individuals accountable for the incident, including several leaders from the BJP and the VHP. Recently, in 2020, BJP was acquitted of the allegations. The demolition triggered several months of communal violence between India's Hindu and Muslim communities, leading to the loss of at least 2,000 lives. Retaliatory violence against Hindus also occurred in other countries. This is a very brief history of behind Babri Masjid and the incidents that took place. We have our usual speakers with us, Dr. Furqan Ahmed, Shaji, Sir Siddiqui, Aditya, and also Gaurav. I'm gonna move forward to Shaji to take over the subject. Shaji. Thank you very much. Am I audible? Can you guys hear me? Yes. Okay, Yes, thank you you very are much. audible, Shaji. So the thing is, I'm straight away going to go to Aditya in regards to the whole thing after giving a bit of a snippet. We've had this conversation with on numerous occasions, and I think a lot of people over the years have heard what has occurred during Babri Mosque and the whole thing, and how that's affected India in a political way. So, Aditya, how do you see this? And then we'll move to Gaurav after that and see how the conversation develops. Thank you so much. So I think the topic here is not the beginning of the conflict. The verdict and its implications. The verdict and the implications were a result of a sustained, what do you call it? A sustained uh, vocal support and basically people demanding a more Hinduized India from a very long time. So Aditya, even in the we can't hear you, or is it me who can't hear him? am I audible? Yes, we can hear Aditya Shah. We can. Yes, we Okay, can hear. I can hear you. Aditya, Yeah, you're yeah. very much Please So audible. go ahead. Yeah, yeah. so 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 we have records back from the 19th century in the 1800s from the Britishers where there were some tensions that arise between the Hindus and the Muslims. The Britishers had record of these incidents where the Hindus, some of the sections, will go to this place and try to install uh,
a murti of Lord Rama and try to create a temporary place of worship for Lord Rama, and used to call it a Hindu Lord Rama Janam Bhumi. So it's not that it only began in the at the time of the demolition, or few months or few years before that. So this argument existed from at least 200 years that we know of, and the assumption is that the mosque was built in the 15th or 16th century by demolishing the Ram temple. So the argument started then, but the consciousness, the Hindu consciousness in the mainstream politics began in the 1920s. Interestingly, this was the 100th year of RSS. RSS celebrated their 100 years of creation just this year, few months ago. So it was a like the Muslim world has had a period of kind of renaissance where the Muslims tried to come together and create a Muslim, and what it means to be Muslim and the Muslim identity. In a similar way, the Hindu consciousness or the Hindu understanding of the world, it was in the right wing of India, was by the RSS and VHP. So it began in the 1920s when people started arguing who is a Hindu and what it means to be a Hindu. So these people, the right wing, wanted India to be a more Hinduized, or a Hinduized India, not very much a secular country, which the Congress wanted or imagined it to be. So after, at the time of the partition, majority of the support, and even the Britishers were closer to the Congress. So at the time of independence, for a very long time, for the at least starting 30 years, Congress was the sole power that was determining the future of India and deciding the policies for India. So I think it was the Congress which subdued the emergence of the Hindutva ideology in India. But it was it was kind of a hot boiling pot that only just started like you know making some noise in the 90s, and it was a result of the first time when even the Congress realized that this awakening can only be molded, but it can't be stopped. So that's what happened in the 90s at the time of demolition of the Babri Masjid. So it wasn't a one day or one incident, but an accumulation of many incidents which resulted in that incident of the demolition. I have a few questions, Aditya. So, this claim that Ram, or the revered figure Ram, was born in that was his birthplace. Is that a recent thing, or what? Do you think that's a substantial claim? So there are some truths to some arguments. For example, like we have historical, even if we say that Ramayana is a fictional book and all these stories are fictional, but we can agree that even whatever the fictional book says, at least it mentions the place and the birthplace of Lord Rama to be Ayodhya, and we know what Ayodhya they are talking about. But the confusion comes when we talk about the exact place of his birth. Like till date, we can't clearly say that the disputed place, or now the after the verdict of the Supreme Court, now the birthplace, or where the Ram temple is being built, that we consider the birthplace of Lord Rama. We can't with surety, 100% surety, claim that this exact place was the birthplace of Lord Rama, or that even a Lord Rama temple existed before this.
before the But demolition Aditya, won't was you say finalized. that's a historical perspective? Wouldn't you agree with the fact that there have been claims about this particular location, or even if you were to consider Rama to be a mythical character, this particular place maybe was where they originally kind of built a temple in his commemoration, if that's a correct word? Because there have been claims of a mandir being very close to that area for years and years, if we're fair. And you can find historical kind of arguments and rows in regards to that, dating back to centuries. No? I think it's a very vague claim. In a sense, let me give you an example with reference to Pakistan. It's like saying uh, Lahore is the birthplace of Lord Lakshman, for example. Just an example. That doesn't prove anything. That doesn't prove what is the exact location where his, birth exact place existed. It's just a city. The same way Ayodhya is a city with more than million people, right? So it's a huge population. And my belief is that, the disputed property got disputed after the Britishers showed up, and they created this. Like, of course, there was always tension between Hindus and the Muslims, but they re-emphasized on this, divide between the Hindus and the Muslims, which made sure that, the place that they chose for the dispute to be like made claim was the exact same place where the biggest, Muslim mosque was built in Ayodhya, or that city. So that's the biggest worship place of the Muslims. The Ayodhya mosque was at the time was the biggest mosque in that region. So it could also be jealousy, it could be also be many other reasons that the Britishers wanted to create it, but we can never know for sure because everything is not that well documented. Few things are very well documented, but not enough. But you do realize that this claim in regards to that being the birthplace of Ram in one context or another has kind of existed from day one this mosque was kind of So, built. we don't have any proof in the 15th or the 16th century at the time of the demolition of the Ram temple, or any, first hand proof of, historians or anybody writing about this demolition of the Ram Mandir at that time. So we don't know for sure. We don't even know that such temple even existed at that time. So I'm not somebody who's saying that it could not have existed. It could have, but it's just that, the historical proof that we have aren't enough to determine the, the possibility or the validity of that claim. It could have existed or it could have not, but we don't have any proof of it. Hmm. Gaurav, what's your opinion on that? Yeah, Gaurav, can you hear me? Am Gaurav, I am I audible? Yes, Yes, audible? yes, 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 you are yes, audible. yeah. Yeah. Yeah, I just want to say that means we I actually think don't have Gaurav any can proof. answer. Yeah, yeah. Yeah, yeah. All I'm saying is that we actually don't have any proof that if means that means Rama actually was ever born in Ayodhya or not. But and if that temple they discovered actually belonged to Lord Rama or it was any other Buddhist temple or something. But the thing is, what the archaeological survey of India discovered is that masjid was not built on a vacant land, and the underlying structure are definitely not of the mosque. So there was a temple, but we they are not sure if it was a Hindu temple or a Buddhist one. But it was definitely built upon a pre-existing structure. So that's what the revelation was. So I think means even if is Ram whether he is born there or not,
That's not the question, but the thing is, which I personally think that means no place of worship should be built on another place of worship, like because means you are suppressing others, like uh, in a way, right? So I don't think that's right. Mm, and land has also been given to Waqf board to create another means masjid 10 kilometer from that area in a village, I guess. Yeah, that's what I know of this incident, to be precise. Yeah, I understand. So Aditya, like Gaurav has also pointed out, and do you believe that there was a temple beneath the Babri Mosque? So again, like this is the argument which can never have any answers to it. So even if we agree that there was a structure, by the way, was a temple or not, we don't know. There was a structure for sure that was demolished behind it. That argument is true. We did not find any kind of murtis or any kind of those structures, but of course there was a structure that was found behind it, beneath it, sorry. So that argument is true, but was it a religious place? We don't know. Was it even a Hindu place? Most likely not. From the surveys that we have, it was very unlikely that was a Hindu place of worship. Second point is that. Third point, even important point, is that we don't even know that even was that place even destroyed at the time of construction of Babri Masjid, or it was it even destroyed like centuries before that. We don't even know that. So the argument is, if that place was destroyed, like say 400 years ago, even before the construction of the Babri Masjid, we can't tell, because as a city, Ayodhya is a very tight packed city. If you look at the city, there has been a lot of construction upon older structures, so we don't know that. So to say that something was constructed on top of something is just like saying that you destroy an old building and you create something on above it, and we don't even know that that place was destroyed. It could have been been destroyed in a war, like say 400, 300, 500 years ago. So it's all up to the imagination. We can imagine anything, but we can't prove anything. Hmm. So there was some kind of a structure down there. So if it wasn't basically something which was Hindu, then it was still something. So are you basically saying there's no proof that the structure beneath was anything religious at all of any religion? That's what the Archaeological Survey of India says. Then why did the court pass on a verdict otherwise? Because they did not even use that argument of what the Hindu claim. Yeah, yeah. Because the verdict, as far as the courts are concerned, is very clear. No? Yeah, but it hasn't nothing to do with the argument of what was lying beneath it. It has nothing to do with the verdict. So, Sid, how do you see this? Well, Sid, first I would have to ask if they are not considering the possibilities of a Sid, temple being beneath it. Uh, am I audible? Yes. uh, Hello? I don't Yes, think we thank can you. hear Sid. Uh, Uh, can anybody affirm We whether or yeah not yeah I'm audible? we can hear you, Sid. We can hear you. Yeah, Uh, he is Thank you. audible. Yeah, so first of all, if I must understand, if the justice system of India did not take into consideration any archaeological findings in regards to a temple being beneath the mosque, uh, what exactly did they base their judgment on? Popular opinion? Uh, my question is to Aditya or Gaurav or anybody I of that think matter. Gaurav should answer. Like, Gaurav, what do you think was the argument made, or the reason given by the Supreme Court in deciding to give this place to the Hindus? Actually, means as much as I know, means they said that there is an underlying structure there, right?
So they said that it was a place of worship, and I think the Archaeological Survey of India has found that it was indeed demolished during that period when the mosque was built, and so it was definitely built over that structure, but they couldn't So the find any. entire argument that you're giving is completely false, first of all. The judgment given was exactly the opposite of whatever argument that you're trying to make. It was given on the basis of the belief of the Hindus. They said that since this place of worship has already been demolished, and because कहते हैं ना हिंदुओं की आस्था, because of their belief of the Hindus in this existence of the birthplace of the Hindus. So, in the goodwill of peaceful coexistence, we are giving this place of worship to Hindus. This is literally the argument made by the Supreme Court. So, okay, let's respect the Supreme Court of India in that regard. So that just means that if tomorrow my grandchildren, who I hope are in like, well, at least hundreds, uh, and the generation after that, and there are a few thousand of us, and we decide, you know what would be a very nice place to go? Uttar Pradesh. And we just decide that because our religious sentiments are hurt, we now want to demolish that particular temple and build a mosque there. The Supreme Court of India will, in the lieu of the judgment that they already gave, would also award such a judgment for my grandchildren or great grandchildren, considering the justice system, if it is in the uh, favor of the popular opinion. Because how long do you think a grudge should follow? It's at least 500 years standing of that mosque. And if the Hindu right wingers are going to consider the argument that there was a temple beneath and they are willing to hold a grudge over that, well, then that just gives my grandchildren the license and justification to at least hold a grudge for 200 to 300 years. What justification would I, if I am living, would be giving to my grandchildren to say, hey, you're not supposed to tear down a temple. That's not what Islam says. What would I respond to my grandchildren and great grandchildren when they tell me, Grandpa, shut the hell up, our religious sentiments are hurt, we're going to tear down that temple and we're going to build a mosque? How am I going So to I think there's a very simple explanation to your question, and it's a very valid question because it's basically a wormhole which can keep on sucking people into the same debate. So in if I'm not wrong, Gaurav, it was in the 92 or 93, even before the verdict of Babri Masjid, the first thing that Supreme Court passed was Places of Worship Act, which said, if I'm not wrong, the date at the time, at the day of the independence in 1947, exception was the Babri Mosque. Any other place of worship that existed on the day of independence cannot be demolished for a place of worship for any another group, which basically means that even if you have proof that anything existed beneath that property, you can't demolish that property and give it to any other religious group. So this act was called Places of Worship Act, and under that you can't demolish any other religious places of worship on the basis of suspicion that our religious place of worship existed on beneath that property. So this is the why possibility exactly I was can give you, Babri Masjid an exception to that अच्छा constitutional? because it was if already demolished. जी जी if I may जो मेन दो पार्टीज थी जिनके दरमियान मसला है they were Hindus and the Muslims ठीक है 92 में demolish हुई
केस चल रहा था, डिस्प्यूटेड पार्टीज दोनों तरफ की कोर्ट के अंदर थी, एंड आई थिंक द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग in my opinion was fair. And it's not just me, it was also the Muslims जो कि कोर्ट में गए थे ये केस लेके, they also accepted the 2019 judgment of the Supreme Court. उन्होंने अपील नहीं दर्ज की, they didn't file an appeal. ठीक है. uh, why I say it was fair is because जो आदित्य ने अभी एक्ट या लॉ इनका बताया है कि at the time of partition 47 से जो structure है it shouldn't be demolished, and that's why जो 92 में इन्होंने demolish किया उस एक्ट को illegal करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. It wasn't justified in any way or form by the Supreme Court judgment. उन्होंने ये कहा था कि अब डिमोलिश हो चुकी है, एंड आई थिंक आदित्य आल्सो पॉइंटेड दिस फैक्ट आउट कि इट वाज ऑलरेडी डिमोलिश्ड. उन्होंने कहा था कि मुस्लिम्स को एक अलग सेपरेट लैंड दी जाएगी फॉर अ मॉस्क, और जो इनका क्लेम है कि देयर इज अ स्ट्रक्चर, रिपोर्ट शो कर रही थी देयर वाज अ स्ट्रक्चर, क्या वो हिंदू टेम्पल है, पॉसिबली was the word used by the Supreme Court judges, honorable judges, उन्होंने possibly का word use किया था. तो कहने का मकसद ये है कि it was clear कि जो act है 92 का that was illegal by the Indian Supreme Court, उसे करार दिया था. So it In wasn't that something case, which was legal. in that case, the people who instigated all of those violence must surely have been, put into justice. They surely would have been, punished for their abhorrent crimes against the general masses, the various killings that these people did, and the subsequent events that followed. They surely would have been put in to account for all of those things that happened. The people who were behind those rallies or were the leaders of those rallies, they surely would have been punished or at least fined in some way, shape, or form. Is that the case? That I have no clue about. I think Aditya and Gaurav might be able to answer. But what this Supreme Court verdict did, जो कि almost 3 decades आप लगा लो, 2.5, जो एक dispute था जिसकी वजह से बहुत criminal violence हुआ था, especially in the early 90s, 92, 93 में, ठीक है, that ended in a way, and both the parties were okay with the Supreme Court decision. The Muslims जो as a complainant के थे, and the Hindus जो दूसरी side पे थे, they were all in agreement कि ठीक है, let's move past this. Okay, that's very understandable. And for all the communal violence that happened, and since the reality is that everybody was acquitted of any crimes, that just tells my great grandchildren and my grandchildren that if you commit communal violence en masse, uh, there is actually nothing going to, put them to justice. So why No, don't we but just do it? arrests were made. Like after the demolition, there were Oh, arrests arrests made. were made. That's very beautiful, right? Arrests were made. Were any of these people convicted? I mean, sure, arrests are made every day. I myself can be arrested if I, break speeding laws on motorway. Yeah, eventually everyone was acquitted. Eventually, but that's what the right-wing governments in India did. They made sure that the people who were arrested for these crimes do get eventually released from the jail. Yeah, so the point here is that the argument that what was the result of it, I don't think it's even very relevant argument. The argument relevant here is how it changed the politics of India. I think that is the important part in the story.
It's not about like, Well, how like, it's just like, do you think even if the some people were charged for these crimes, do you think it's even makes any difference to the people, a common people? They just the way like, they would have been like, Muslims have the martyrs or the people who commit jihad. They would have been even called like, some kind of Hindu martyrs. You would have made heroes out of them, nothing more than that. So I don't think like, that is yes, the but main you, important you issue know what? here. You know what? The main issue It is does make a is difference. what. Adit, no, Aditya, it does make a difference. The person who killed the governor of Punjab in Pakistan, uh, he was put to justice. Now, a lot of people agreed with what he did, a lot of people disagreed with what he did, but at the end of the day, the notion of the nation was decided. At the end of the day, the repute of the Pakistani court system was upheld. It was basically saying that whatever you believe is going to be the resultant of your afterlife, is going to be decided in the afterlife. The crimes that you commit on this earth are going to be treated according to the laws of while you are on this earth. The court will not consider your feelings. The court will consider laws and facts and evidence, and any crimes that will be committed will be punished. That is the difference that it makes. Acha, It made a Sid, I martyr think. in Pakistan as well, but it doesn't So matter. it wasn't. Acha, It's not. uh, Babri Masjid wasn't a living entity, by the way. Just to add. अच्छा, Aditya, if I may, 92 में when it was demolished, 28 or 30 people were named, जिनमें बीजेपी की टॉप टीयर लीडरशिप एल के अडवाणी इस तरह के नाम भी थे. ठीक है, the case uh, took 28 years or 30 years, और 2019 में बाबरी मस्जिद का डिसीजन आया था, Yes, और 2020. ये 2020 में इनका एक्विटल हुआ था. जो इन्वेस्टिगेटिंग इनकी एजेंसी है सीबीआई, उसने एक अपील दर्ज की है इन द सुप्रीम कोर्ट कि ये एक्विटल गलत है, बट इट्स स्टिल पेंडिंग, But they were, एंड but they इट were हैज बीन still in 3 the jail years. for 30 years, right? Almost 30 years they were in jail. नहीं, बाहर भी आ गए थे कुछ लोग. अच्छा. केस पेंडिंग था, बट दे वर ऑन, कोई बेल पे आ गया क्योंकि लाइक इट डिपेंड्स, बट सम ऑफ देम आर स्टिल क्वाइट प्रोमिनेंट नेम्स, और वो पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव रही हैं, जो कि इनमें थे एल के अडवाणी वगैरह, इस तरह के नाम हैं. तो आई थिंक देर इज अ प्रोसेस which I see in terms of investigation and the court rulings, जो कि follow हुआ है, but it is still a very tricky situation. क्योंकि जो इनकी सेशन कोर्ट, या आई थिंक सेशन कोर्ट थी जिसने ये रूलिंग दी थी एक्विटल की इनकी 2020 में, और उसने लैक ऑफ एविडेंस एंड लैक ऑफ प्रूफ पे आके केस खत्म किया था, इन्हें एक्विट कर दिया था. तो इट्स समटाइम्स डिफिकल्ट टू गेट To एविडेंस, prove a क्योंकि उस टाइम crime. पे, हाँ, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल फोन्स, वीडियोस, it wasn't like 2023, and then like they also put a line in the And it judgment was के, a uh, mob. Even the police yeah, backed out of that place. उन्होंने जो लास्ट में लाइन कह रहा था, वो उन्होंने यही लिखी है कि इट वाजंट अ प्री प्लान्ड डेमोलिशन, मॉब ने उसी वक्त डिसाइड किया, एंड दे सॉर्ट ऑफ took a Yeah, decision to because people basically were demolish the gathering mosque. there from even couple of days before that actual event. So people were already like, gathering there. They were like, getting louder, and there came that tipping point when even the police realized that to control them is now impossible. So they backed down. They moved out of that place, and that mob started climbing on that building, right? So I don't know, like, I agree with Sid in this point that the justice wasn't delivered there.
But so it is the, like, the judiciary system in India. At least I'll talk about India. I'm not somebody who's talk about, like, our neighbors. I think it happened in India, so I'll talk about India only. So, like, the justice system is very weak in India. It was even weaker in the 90s, right? कहते हैं ना, हमारे जस्टिस की जो मैयार है, जिसे आप कहते हो उर्दू में, कि हमारी जो टॉलरेंस है, इट्स लाइक इट्स वेरी हाई. A prime minister of United Kingdom in a curfew period spends the evening with his friends drinking, is fired from his position, right? Your Boris Johnson, the prime minister, who's just accused of, like, having few drinks with, like, a couple of his colleagues, is fired from his post because he does that. Indian Parliament has literal criminals who have, like, cases of rape and murder on them, who are very, like, very vocal and known as, like, Bahubali people, like, very strong men image. So, like, the कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे जस्टिस का और हमारे यहाँ पे जो जस्टिस का मयार है वो बहुत अलग है एक सिविलाइज्ड वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी से. But in all fairness, I think time ज़्यादा लगा. It took almost 3 decades, but the decision was still fair. I don't see any other way uh, how this dispute might have ended. Um, yeah. अच्छा, also the Hindus also claimed that, we were performing puja and we were doing worships since, like, the 19th century there. So that also solidifies our claim also on that property, right? So even Hindus were doing worship there before the independence. So in a way, which also makes their claim also legitimate for that place, right? You get my point? They were using the mosque for puja. Yeah, they in the main Oh, okay. courtyard. So that mosque was not functional since 1945, even 2 years before the, like, independence. There were It no, was like, what do you call yeah. it, mosque The processions in the whole mosque. thing was never about the building. The whole thing was never about the building. It was not about the structure of the mosque. It was never about that from the sides of the Muslims. It was about the sanctity of our presence, the respect of a population. That mosque could very well have been 5 yards away from that particular place, 5 kilometers away from that place. It would have not mattered. It was never about that particular place or those particular stones. That mosque is not Haram. That mosque is not Jerusalem. It's not the Dome of Rock. It's not Masjid al Aqsa. It was about the respect and sanctity of the people, the Muslim people of those regions. That mosque might as well have never been used for the past bloody 50 years. It would have not mattered. It was never about that, was it? It was about shitting on the faces of the Muslim populace of that city. No, but how is that shitting on the मैं faces? यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ. आपने कभी देखा है कि वो में यूरोप में या और कंट्रीज में एक क्या कहते हैं उसको, एक पुरानी बिल्डिंग जिसके पीछे कोई हिस्ट्री होती है उसको डिमोलिश किया गया. व्हाई इज इट? आई एम नॉट सेइंग इट्स जस्ट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एज वेल. अभी 2 दिन पहले एक 150 ईयर ओल्ड मंदिर को गिराया गया विद अ वेरी पेटी एक्सक्यूज के बिल्डिंग पुरानी थी, राइट? तो उसको गिरा दिया गया, ठीक है? तो बाबरी मस्जिद हैज हिस्ट्री एज वेल. इट्स अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट विद सबकॉन्टिनेंट के लोग और पुरानी और हिस्टोरिकल बिल्डिंग को गिराना. आई डोंट केयर अबाउट द मस्जिद पार्ट, ठीक है? मस्जिद दूसरा भी बन जाएगा. मस्जिद हैज नथिंग टू डू माय मजहब. किसी को नमाज पढ़ना होगा वो रोड पे भी पढ़ लेगा. वो बाहर
खुले में भी पढ़ लेगा, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। माय प्रॉब्लम इज कि एक एक बिल्डिंग है जो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ठीक है, दैट बिल्डिंग काइंड ऑफ रिप्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ योर एरिया। बाबरी मस्जिद वाज पार्ट ऑफ यूपी's हिस्ट्री, राइट? why is it so convenient for people कि बस थोड़ा सा जज्बा आ गया, वो हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सारी पुरानी बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग गिराओगे, ठीक है, फिर तुम लोगों को इतने ज्यादा जो फोर्ट्स बने हुए हैं उनको भी गिराना होगा, तो फिर क्या हिस्ट्री रह जाएगी? फिर इंडिया को फिर नए सिरे से बनाना पड़ेगा, यूपी में नए बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे। अब राम मंदिर तो बना लिया है, आई अंडरस्टैंड, seems like a very pretty building as well, but it doesn't have history. You could make the same Ram Mandir in some other place, right? But destroying Babri Masjid, technically it has nothing, ठीक है मुसलमान खफा हुए होंगे, but it has no religious connotation or as such कोई सी attachment है उस building के साथ. But I'm just talking on a basis के why are Indian more, in fact, people of subcontinent more prone towards destroying their own history. तो कोई जो भी दो कहे, पॉइंट में इस पे मुगल जो है कंप्लीट वो करें आप। हाँ, जो भी है कि अगर मुगल जो है वो नहीं है हमारे इस, उन्होंने रूल किया है गुड 100 समथिंग ईयर्स के लिए रूल किए, दे आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर के बारे में, दे आर पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, इफ दे मेड बिल्डिंग्स दे आर पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, ठीक है। सेम गोज फॉर द हिंदू स्टफ एज वेल, कि अगर कोई हिंदू बिल्डिंग है, कोई बुद्धिस्ट बिल्डिंग है, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, ठीक है। Why would you just go and destroy the building because you felt like it, because your emotions were somehow hurt by it? अच्छा, मैं 3 इसमें छोटे छोटे पॉइंट ऐड करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंगली है ना, you'll understand the psyche behind the demolition, right? आप सबसे पहले नोटिस कीजिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब स्टार्ट होती है, राइट? इट स्टार्ट्स आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ब्रिटिशर्स आते हैं और पहली बार ये जो जो झगड़ा है ना, बाबरी मस्जिद यहाँ राम मंदिर था, ये आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होती है। कोई भी जो है, कहता ना, जिसे मैं कहता हूँ माइकल लाल, अगर भगवान राम एटलीस्ट हम मानते हैं कि यार 2000 साल से तो यहाँ थे, ये तो आस्था है लोगों की, तो कोई आप हिस्ट्री की कोई टेक्स्ट बुक निकाल के दिखाइए जो कि अयोध्या में इस मंदिर के बारे में बात करती है, इसके बारे में कुछ बताती है कि किस तरीके का ये मंदिर था, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ डिस्कस करती है, या फिर इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कोई ट्रैवलर बता रहा है कि यहाँ पे ये मंदिर था एंड इट वाज वेरी वेरी रिलीजियस प्लेस फॉर द हिंदूज, a lot of Hindus used to go to this place, establish even that argument that historically it was like, for example, you ask a Muslim, like, what is the importance of Aqsa for you, you'll see from the 10th century, 12th century, 15th century Muslims going there and talking about, like, your history and, like, where the prophet and, like, after his descendants, what they used to do there, who built our, like, who completed first structure, who completed the second structure. You get a lot of history from, like, that place, even if starting from the Jews, right, from the Mount Temple times, you get a lot of history. But about this Ram temple, the very first time we talk about is from a conflict between the Hindus and the Muslims, starting from that point. And that argument is established under the Muslims. And what did the Hindus want to do there? Hindus want to establish that कि अब हम और ज्यादा नहीं सहन करेंगे, we won't, like, हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हमारी भी इज्जत है यहाँ पे। एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस हिंदूज वांट टू एस्टैब्लिश कि देखो, अब इंडिया हमारा है, हम हिंदू है एंड वी आर द मेजोरिटी, ठीक है। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप, इट्स ऑल्सो अबाउट आवर डिग्निटी, कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाली जो एक आर्ग्यूमेंट है वो एस्टैब्लिश करें। वरना आप इतना सोचिए कि किसी भी हिंदू को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि जो मुसलमान जिन्होंने 200 साल लूटा, जिन्होंने लिटरली जो है आपके परिवार तबाह किए, लोगों को भूख मारा जानबूझ के, वो अच्छे हैं। पर जो मुसलमान या जो मुगल रूलर्स थे, जिन्होंने यहाँ पे खाया, यहाँ पिया, यहाँ शादियां की, यहाँ बच्चे किए, यहीं दफन हुए, वो पराये हो गए। तो इट्स जस्ट द पर्सपेक्टिव।
which I believe was created by the Britishers to follow the divide and rule policy. That's my total understanding of this conflict. Yeah, it's surprisingly weird कि जो मुगल थे, फॉर एग्जांपल औरंगजेब को ही ले लेते हैं, वो 3 जनरेशन से राजपूत माओ का बेटा है। कोई 3-4 जनरेशन से राजपूत माओ का बेटा है। सो इट्स लाइक आधा वो बंदा जो है वो लोकल ही है, ठीक है? और जिस तरह से ब्रिटिश एम्पायर ने किया कि मतलब लूट के चले गए, ठीक है? लूट लिया, उधर बेच दिया, चले गए, ठीक है? The Mughals came, they took over and they became part of the community. ठीक है, वो यहीं पे रहे, यहीं पे दफन हुए, यहीं पे मर गए, ठीक है? लेकिन अभी भी मतलब ये मेक्स नो सेंस कि अगर हिंदू सुप्रीमेसी लानी है तो ये बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वो भी तुम्हारे लोकल लोग हैं ना। एक पॉइंट पे लोगों को तकलीफ ये होती है कि मेजोरिटी जो मुसलमान है दे प्रेटेंड टू बी अरब्स, ठीक है? कोई ये बात नहीं कहना चाहता कि मे बी यू मेड देम फील दैट वे कि तुम यहाँ के नहीं हो, यू मुस्लिम्स, यू डोंट बिलोंग हियर, ठीक है? सो नाउ दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू अटैच देमसेल्फ टू अदर कम्युनिटीज, ठीक है? दे वांट टू अटैच देमसेल्फ टू पर्शियंस और अरब्स बिकॉज दे वर मेड टू फील लाइक दिस। फिर वही वाला पॉइंट उठा के फिर मुंह पे मारते कि हाँ तुम लोग तो अपने आप को यहाँ का समझते भी नहीं हो। अगर टेक्निकली देखा जाए, मैं अभी पाकिस्तान की एग्जांपल दे देती हूँ, हमारे कल्चर में कितनी चीजें हैं जो हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड है। मैं आई कैन टेल यू मल्टीपल स्टफ जो हिंदू वो से इंस्पायर है, रिलीजन से इंस्पायर्ड है, ठीक है? बट देन द सेम पीपल वांट टू बी पार्ट ऑफ अरब। अगर देखा जाए तो इट इज कमिंग फ्रॉम उस साइड से भी, तो कोई ऐसी वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही ना कि वो कहें कि अच्छा ठीक है आप लोग मुसलमान हो, ठीक है, आप लोग हमारे मुसलमान हो, यू नॉट पार्ट ऑफ द अरब, आप लोग हमारे मुसलमान हो, आप हमारे साथ ठीक हो, ठीक है? मस्जिद बनाए, खैर कोई मसला नहीं है, ठीक है? हम दूसरा अयोध्या इतनी बड़ी जगह है, हम वहां पे कोई दूसरी जगह पे राम की जन्मभूमि बना लेंगे ना, कोई इतना इशू नहीं है। But to tear down one place, and I'm not endorsing the fact that शायद ऐसे भी हिस्ट्री में शायद हुआ होगा कि मुसलमानों ने शायद मंदिर तोड़े हैं, ठीक है? आई मीन आई थिंक इट वाज गजनी जिसने सोमनाथ का टेम्पल मल्टीपल टाइम्स जो है लूटा था, बट आई डोंट थिंक इट हैज एनी रिलीजियस थिंग गोइंग ऑन बिकॉज आई मीन अगर कोई कहे कि मुगल जो थे वो बड़े मुसलमान थे और वो जो है इस्लामिक, they represent the Muslim Ummah in subcontinent. That's not exactly true. I mean, they were not worried more about Islam than they were worried about their own empire, and that meant appeasing Hindus. They couldn't have ruled for such a long time without appeasing Hindus. तो ये मस्जिद तोड़ना बिकॉज वो ये बाबर ने बनाई है और ये हमारे मंदिर के ऊपर बनाई है, जस्ट मेक्स नो सेंस। you're destroying your own history just because someone told you कि एक फलाना बंदा है जो तुम्हारी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता, उसने तुम्हारी चीज तोड़ दी दूसरी चीज बनाने के लिए। वो बिल्डिंग तो टूट गई, नई वाली बिल्डिंग क्यों तोड़ रहे हो? नहीं, यही चीज तो है ना कि जब तक आई थिंक सब कॉन्टिनेंट के लोग ये जब तक बात नहीं समझेंगे, अब लोगों की आर्ग्यूमेंट ये आ जाती है मुस्लिम ऐसे हैं, वो कहते हैं हिंदू ऐसे हैं, डजेंट मैटर। कहता वो जो है वो जो है इस्लाम फैलाने आया था, चलो मान लिया फिर इस्लाम फैलाने भी आया था इन द 21st सेंचुरी। हम एटलीस्ट ये तो अग्री कर सकते हैं कि यूरोपियंस ने, फुरकान भाई विल कंफर्म, कि यूरोपियंस ने जितना आपस में कत्लो गारत की है उतना तो सब कॉन्टिनेंट में कभी नहीं हुई, ठीक है? दोनों वर्ल्ड अगर वॉर वो लोग, यूरोपियंस हाँ, की तो किए उससे थे। पहले यार पिछले 1000 सालों से जो है वो डार्क यूरोप का जो डार्क एजेस है वो क्या था, एक दूसरे के गले काट रहे थे। अगर वो लोग ये समझ सकते हैं कि यार हिस्ट्री के ऊपर जो है हम अपना प्रेजेंट नहीं डिसाइड कर सकते, हमें आगे बढ़ना है, तो you come up with solutions. But if you don't even want to forget the past and forgive the past, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। एंड देयर इज नो सरप्राइज, बोथ लाइक वी कैन क्लेम कि यार पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, भाई इंडिया में भी जो है, चलो मान लिया थोड़ा सा जो है वहां पे थोड़ा सा आटे की ज्यादा समस्या होगी, पर इंडिया में भी 80 करोड़ लोग जो है वो सरकार से जो है राशन के भरोसे चल रही है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जो है सोने की जो है महल बने हुए पड़े हैं, यहाँ भी आधा देश जो है वो कच्ची बस्ती में रहता ना यार, ऐसा तो नहीं है। मतलब if India's GDP per capita is 2,500, Pakistan is 1,500, they both are very poor countries compared to like any Western world which is 50,000. Like एक अंग्रेज के लिए तो दोनों ही बहुत गरीब देश है,
कर सकते हो कि who's even poorer, ठीक है, Aditya got but that disconnected. doesn't solve the problem, right? It still remains one of the poorest countries. India's rank on per capita basis is 139th. Pakistan could be 150, but they both are very poor. That is the argument. So if we want to have solutions, we can't live in the past. So And argument सिर्फ they're यही है. both very poor because they've both made their identities against each other. इतने एक दूसरे में इतने मसरूफ रहे कि भूल गए कि दुनिया में आगे भी बढ़ना है. हाँ तो मतलब कोई बुरे हैं तो भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होंगे बुरे यार, क्या कर लेंगे, मतलब लिव विद इट. ठीक है, अब हिंदू ऐसे हैं, मुसलमान जैसे भी हैं, यू हैव टू लिव विद इट, दैट रियलिटी, यू कांट चेंज इट. मुसलमान जो है इंडिया में बुरे हैं भाई, फिर भी 20 करोड़ है, क्या करोगे, मार दोगे, क्या करोगे 20 करोड़ लोगों का. You have to live with them, and if you want a better India, then you have to educate them, you have to employ them, you have to create an environment where both the communities can live peacefully. That is the only solution. You can hate them, you can love them, either ways this is the only thing you have to do ultimately. वरना कहते हैं ना, जिनके घर कांच के जिनके महल होते हैं, वो लोगों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते. तो आप अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, चाहे आप अमीर भी बन जाओ, पर अगर आपकी सोसाइटी का एक सेक्शन गरीब रह गया तो वो आपके घर पे बंदूक लेके आके रॉबरी करेगा. ठीक है, सड़क चलते लोगों को बंदूक से मारेगा वो. आप देख लीजिए, आप साउथ अमेरिका में जो हालात है, आप देख लीजिए क्या है वहां पे. कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है साउथ अमेरिका में, पर वहां पे आप सड़क पे जो है, यू डोंट हैव अ डिग्निफाइड लाइफ. आप सड़क पे जो है एक ढंग की घड़ी पहन के निकलेंगे, आप सड़क पे अच्छी गाड़ी लेके निकलेंगे, कोई आपको बंदूक से गोली मार के चला जाएगा आपकी चीजें लूट के. सो डू वी इमेजिन द सब कॉन्टिनेंट टू बिहेव दिस वे? तो आप कहते ना कि फिर तो आप करिए जो आपको करना है. बट इफ यू वांट टू इमेजिन अ सिविलाइज्ड first world society, even after like 50-70 years, then you have to start working on these issues. You can't, like, even if you don't like the Muslims, still you have to cooperate. ठीक है, वरना वो आप उनके कंधे से कंधे मिला के चले, वरना आपके पैर पकड़ के और जो है घसीट के चलेंगे आपको. एनीवेज सॉल्यूशन एक ही है, यू हैव टू एजुकेट द मुस्लिम पॉपुलेशन, यू हैव टू लिव विद देम, एंड यू हैव टू प्रोवाइड देम विद, लाइक, डिसेंट, क्या कहते हैं, जॉब या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, चाहे पसंद हो या ना हो आपको. यही इलाज है इस चीज का भाई. ये सरप्राइजिंगली वियर्ड कि 1400 साल से एक साथ रह रहे हैं हम लोग, and we still don't know how to live together. The और वो Pakistan, किसी ने India कहा I'm है ना, talking वो about. किसी ने कहा होगा, चलो कोई कहता है कि यार ठीक है हम अरब से आए थे, वो आए, तो भाई डीएनए टेस्ट करा लो यार सबके. जिसको ये घमंड है कि हम वहां से आए थे, यहाँ से आए थे, आप अपने डीएनए टेस्ट कराओ. हाँ, किसी का 10% कहीं का ज्यादा आ सकता है, किसी का 10% कम आएगा, बट हाँ 19-20 सबके वैसे से ही डीएनए आने हैं. तो भैया चिल करो, रिलैक्स करो. ना तो कोई 100% इंडियन है, क्योंकि माइग्रेशन यहाँ पे पिछले 5 या 10 25 हजार सालों से भी चल रही है. तो लाइक लिव विद दैट रियलिटी. देयर हैज बीन मल्टीपल इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेशंस, starting from the Adivasis, which we call the, like, the first Indians, the first, like, the Africans, then the Dravidians came here, then the Aryans came here, then the Mughals came here. So nobody is original here. Relax, everybody came here from somewhere. तो पर हम उस पे भी डॉगमा बनाते हैं, नहीं कि आउट ऑफ इंडिया थ्योरी हम बनाएंगे कि इंडिया से बाहर सब गए थे, इंडिया में हमेशा everyone रहे, came from Africa. विच इज, हाँ मतलब कुछ भी थ्योरीज बना लो आप यार, यू कांट रन फ्रॉम द रियलिटी, फ्रॉम द साइंस फॉर टू लॉन्ग. Eventually you have to agree to the Aryan migration theory. If you don't even like it, you still have to. जी, Indeed. आई And थिंक especially India being travel, because people travel to India, and a lot of people are, I think, Westerners are settling in. How are they? What are they going to do about that? So if you can accept them, just accept those that are claiming to be Arabs as well. No big deal. Anyway, Furkan bhai, please. हाँ, आई थिंक बहुत कम्युनल हार्मनी पे बात कर ली. हेट एग्जिस्ट एवरीवेयर. जब आपकी मेन स्ट्रीम में आती है, पॉलिटिक्स का पार्ट बनती है, तब मेरा ख्याल है द प्रॉब्लम अराइजेस. अदरवाइज दीज सेगमेंट्स अगर सोसाइटी में होते तो हैं, दे एग्जिस्ट. अगर वो मेन स्ट्रीम में ना आए तो that's something which is fine. You can't eliminate hate among communities, among sects. अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, it exists. बट इस इवेंट की वजह से
इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आए, अगर उस पे हम बात करें, क्योंकि आई थिंक दिस वाज अ वेरी पिवटल इवेंट जिसकी वजह से राइट विंग मूवमेंट्स को एक बहुत ज्यादा पुश मिली थी। आई थिंक if you want to like discuss this, Aditya, आप start कर लें। After I'm talking about after 92 demolition of the Babri Masjid. जी मैं बता देता हूँ आपको इसके बाद चेंजेस। देखें, इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर पीपल, बट आप ये सोचिए कि एट द मैं सिर्फ एक छोटा सा पीछे जाऊंगा एस्टैब्लिश करने के लिए आर्गुमेंट। जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हो रही थी ना, तो आपने एक सुना होगा द्रविडियन मूवमेंट भी इंडिया में एग्जिस्ट करता था। द्रविड़ा, वी आर द द्रविड नाडूज। जो साउथ इंडियंस थे वो अपने आप को द्रविडियंस मानते हैं। दे बिलीव इन द आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, सरप्राइजिंगली, राइट? सो दे दे क्लेम कि हम द्रविडियंस हैं, विच इज ट्रू। मतलब द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ माइग्रेशन बिलीव्स इन द द्रविडियन थ्योरी। तो उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि ये जो आर्यन लोग थे, यही कास्ट सिस्टम लेके आए हैं इंडिया के अंदर, और यही वो लोग हैं जो ये वेद जो है लेके आए हैं, जो अपने आप को आर्यंस कहते हैं। तो उन्होंने जो है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वहाँ जो सेक्युलर जो मूवमेंट चली, उन्होंने कहा कि जो ये ब्राह्मण्स हैं इंडिया में, इसलिए ब्राह्मणिज्म और ये सारी आर्गुमेंट भी आती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, इन्होंने हमारी जमीनों पे कब्जा किया और हम पे रूल किया। तो दे वांटेड टू डी ब्राह्मणाइज द साउथ इंडियंस और द साउथ इंडियन सोसाइटी। और जो कांग्रेस थी ना, सरप्राइजिंगली वो एक ब्राह्मण पार्टी मानी जाती थी, कांग्रेस। यस, जो आज तक राहुल गांधी जो है वो आज उसने 4 साल 5 साल पहले भी एक मंदिर में गया था। तो हमारे मंदिर में किसी ने उनसे पूछ लिया था कि आपकी जाति बताइए, उसने बताया था मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। जनेऊ समझ गए ना, वो एक धागा जो जो पहनते हैं हिंदू, सिर्फ अपर कास्ट पहन सकते हैं, वो हर कोई नहीं पहन सकता। शूद्रों को अलाउड नहीं है वो पहनना अपेरेंटली। तो उन्होंने अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बताया। और अगर आप हिस्ट्री निकालेंगे, पंडित नेहरू ले लीजिए आप, या इंदिरा गांधी ले लीजिए, सारे ब्राह्मण्स थे। ठीक है, तो ये ब्राह्मण पार्टी थी। और द्रविडियन पार्टीज को हमेशा लगता था कि ये ब्राह्मणवादी जो है, ये जो मनुवादी जिन्हें कहते हैं, ये लोग वापस आके हम पे रूल करेंगे। एंड दे इवन आस्क्ड द ब्रिटिशर्स टू नॉट लीव देम ऑन द हैंड्स ऑफ दीज ब्राह्मणवादीज। तो पहले तो जो है 40 साल ब्राह्मणवादी पार्टी है, जो राइट विंग हिंदू पार्टी जो है, कांग्रेस को माना जाता था। हमारे कांग्रेस से भी ज्यादा एक लेफ्ट पार्टीज एग्जिस्ट करती थी। इवन हमारे, आपने पता होगा, अभी भी रूलिंग जो है हमारे कम्युनिस्ट पार्टीज भी एग्जिस्ट करती है, विच वर अगेंस्ट दीज सो कॉल्ड राइट विंग पार्टीज। कांग्रेस एक राइट विंग पार्टी मानी जाती थी, लिबरल सेंटर राइट की सी पार्टी। फिर जो है ये वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, और आरएसएस से जो है जनता दल निकलती है। जनता दल से जो है वो फिर भारत। Is it me or I can't hear Aditya anymore? बंद हो गई है। हाँ हाँ Hmm. बिल्कुल, आई थॉट इट वाज मी। आदित्य, तुम्हारी Okay. आवाज आनी बंद। Hmm. Aditya, you're not audible. Okay. I think Aditya ka connection का issue. I'll go to Shaji. Shaji. No, no. It's interesting what he was saying, लेकिन अगर हम मेन पॉइंट के ऊपर फिर आए, तो मेरा इसके ऊपर बहुत सिंपल सा ओपिनियन है। First time this became a contention between Hindus and Muslims was more than 4 centuries ago. So obviously राम कोई mythical character था या नहीं था, regardless of that, एक क्लेम तो था ना कि राम की एक बर्थ प्लेस है। तो गोइंग बाय दैट, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि उस जगह के ऊपर शुरू के अंदर जो बनाया नहीं बनाया। इफ वी थिंक अबाउट इट, बाबर वाज अ मुस्लिम रूलर, ही हैड गुड एंड ही डिड बैड। अब उसके अंदर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज अ मुस्लिम इशू। I do not consider this to be a Muslim issue. This can be an Indian Muslim issue. I understand that.
This can be if they were destroying mosques elsewhere, and if for example court जो है वो ये decide करती है इसके अंदर, going back to that entire situation, the Muslims are not going to get anything out of it, it would be a different thing. अगर वो revert structure भी था जिसको destroy कर दिया गया, that today does not exist. तो लोकेशन तो मुसलमानों के लिए इम्पोर्टेंट है ही in terms of this particular mosque. So I don't think what even if those people who destroyed it, अगर वो convict भी हुए नहीं भी हुए, they should be held accountable. But I don't think nothing much can be done further in regards to that. It's an old case now. It's finished. So I really don't understand कि ये किस point of view से आ रहे हैं और ये किस तरीके से इतने सालों के बाद भी अभी तक एक issue बना हुआ. That's about it. Because maybe Shaji, Indian Muslim feel that this was the first that it was the क्या कहते हैं ना बुनियाद थी जो इस्लामोफोबिया की एग्जैक्टली शुरू हुई है. आप समझ रहे हो कि this was the first one. There others are going to follow, like we know the case of Gyanvapi, which honestly speaking actually had Hindu what do you call it, Lingam. shivling. It had a shivling, so I would. I think Islamically, you're not allowed to pray in places in masjids that were forcefully made on someone else's prayer places. But the thing is, I think it was not about the masjid. I'm pretty sure no Muslim consider masjid to be that important. ठीक है? I think it was more about the start of the erase of their identity. It was more about that. So I think अभी भी आज के दिन जो है लोगों ने security जो है वो की हुई है because they're expecting some ruckuses or I don't know protest or something like that. अच्छा शाजी, I have a question. जब we have had conversations with Indian right wing बहुत से लोगों के साथ, and whenever we talk about Babri mosque demolition और इस incident पे बात करते हैं, they try to bring up certain facts or cooked up facts or half cooked facts or like untrue facts, whatever, and they try to justify the demolition. उस पे what do you think, keeping in like mind के जो इनकी 2019 की judgment थी, उसने demolition of Babri Masjid categorically illegal act कहा था. So why do they try to justify it even जिस ruling की base पे वो कहते हैं कि we won, actually अगर उस ruling को पढ़ा जाए, जिस रूलिंग को ये बहुत साइट करते हैं कि उस रूलिंग की वजह से हमारा एक स्ट्रक्चर नीचे था, उस रूलिंग में तो उस एक्ट को इन द फर्स्ट प्लेस वो इलीगल करार दे रहा है. देखें रिलीजन जो है ना, that is based upon people's emotions, and the fact is that as far as Hindus are concerned, in their vast majority, they do not consider Ram to be a mythological character. They consider him to be a deity, and not only that, they believe that he was born over there. इसी को ज़रा थोड़ा सा अगर हम न्यूट्रल होके सोचें तो what you'll figure out कि अल अक्सा मॉस्क के बारे में मुसलमानों का क्या ख्याल है कि Prophet Muhammad, upon him be peace, I being a Muslim myself, went to Miraj from that place. Why would a non-Muslim believe that? Why would a non-Muslim believe that a character called Burak came in with a prophet sitting in Mecca, somehow got into that place and then went into the skies? And that is the purpose and the reason why Muslims claim that place to be revered, and hence they have a thing. So you have to understand कि आप सारी चीज़ें फैक्ट के ऊपर, जहाँ पे एक वास्ट नंबर ऑफ पॉपुलर्स होती है, उस चीज़ के ऊपर नहीं बेस कर सकते खाली.
If you twist the corner in a round of that, you have to basically see कि एक religious group के लिए उस जगह की essentially importance क्या है, and that's how you equate it. अगर आप उस equation को देखें, again I'll give you an example of Al-Aqsa Mosque, sorry, Jerusalem. When Hazrat Umar Razitala Anhu went into Jerusalem, in the church of Sepulchre, the holies of the holies, the Christian priest at the time asked Hazrat Umar to pray in that place, but he refused. And the reason he gave was that if he's going to pray over there, what will happen essentially, it is going to become for future Muslims, as he had prayed there, and they will state that their ulama came and prayed over there. So the precedent was set. सो जब आप इस तौर तरीके की चीज़ों को देखते हैं और आप इस चीज़ को कंसिडर करते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी फेयर. अगर हम इस केस को भी उस तरीके से देखें तो Hindus, in this case, people who follow the Sanatan Dharma, they basically indicate that their deity was born there. उसकी एक emotional value है, उनकी उसके साथ एक belief है. Compare that to the Muslim claim, it is just a mosque built by a Muslim ruler. We do not have that kind of weight on that. This is just my opinion. And that building has been destroyed. And if that building has been destroyed, उसकी जगह की कोई referred value ही नहीं है मुसलमानों के लिए, as in the location, जिस तरह for example Jerusalem की है, मक्का की है, मदीना की है, then why are we like even contesting that that ship has sailed? आपको एक नई जगह दी है, आप वहां जाके मस्जिद नई बना लें, उसका नाम बाबरी मॉस्क रख दें, क्योंकि अगर उस जगह पे भी आप बनाएंगे तो वहां पे झगड़ा भी रहेगा. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ यू थिंक अबाउट इट, खाली झगड़ा ही नहीं रहेगा, लेकिन वो वाली पुरानी बिल्डिंग तो आने वाली है नहीं, तो हिस्टोरिकल वैल्यू तो चली गई. So it is more of a ego clash for some Muslims. Maybe Indian Muslims will have a different perspective. But this is how I view the entire situation. Not everything should be based on facts. In that way, एक इतने बड़े religion का अगर ये claim है कि that is where their deity was born, go with it. Learn to let go of some things. It's fine. शाजी रिलीजियस शाजी क्लेम अगर शाजी, लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगाऊंगी. तो फिर तो हिंदू लोग तो है वो काबे को भी वो करते हैं, क्लेम करते हैं कि उनका कोई शिवा का टेम्पल है काबे का, काबा. तो अब उसके साथ फिर क्या करें? नहीं No, उसके अलावा अगर again, जब जब उसके काबा की बात, one question at a time से, Kaaba is a different kettle of fish. Again, the fact is कि काबे की जब आप बात करते हैं तो it is not always been a claim. That is a myth in those regards, and not all of them believe that. Ram Mandir अयोध्या में राम का पैदा होना, according to them, that has been their claim for since Hindus have existed. Since But how does a mandir being there proves that Ram was born there? Who has a proof? that proof is not there. लेकिन No, अगर it's कोई the कह रहा opposite है, way around. Just by knowing that Lord Rama was born in Ayodhya, how can we prove he was born in exactly that exact so my place? question would be a counter question. How can you prove to a non-Muslim that Prophet Muhammad, upon him be peace, Masjid al-Aqsa से जन्नत के अंदर गए थे, सऊदी अरेबिया में बैठे हुए? No, Shah, but we can establish from like thousands, like 2,000 year records that there was a place called Ayodhya. We know even from like there are like hints that this is the place that used to be called Ayodhya, and Lord Rama was born there.
So that's like historically proven. We can prove, at least even if we call it a fictional character, we can Yeah, prove and I that agree Lord to Rama that. was born in Ayodhya. मेरा But मेरा what यहाँ we पे can't क्वेश्चन prove, मेडूसा को का था एक मैं सेकंड एक आई सेकंड थिंक जी मैं एक पॉइंट आई डोंट थिंक कि मस्जिद अल अक्सा का कंपैरिजन जो है राम जन्मभूमि के साथ करना इज फेयर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इवन अल अक्सा इज जस्ट वो मॉस्क जस्ट अ बेसिक मॉस्क आई मीन देयर इज ठीक है हमारी वो है कि ये था या वो था बट इट इज जस्ट अ बेसिक मॉस्क ठीक है कल why को is अगर that अगर considered अगर why एक सेकंड अगर एक सेकंड अगर कल को जो हमारी प्रोफेसी सच होती है तो मस्जिद अल अक्सा इज सपोज टू बी टेयर डाउन राइट तो वो तो हमारी ही वो पे इट्स नॉट आई मीन सच वो नहीं है मसला नहीं है कैन यू टेल वेयर कैन यू टेल मी द वो लोकेशन ऑफ वेयर आई मीन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न यू कैन नॉट yeah इवन पॉइंट दैट Muslims have marked that in मुस्लिम Al हैव Aqsa. बट Yeah, Muslims have marked that. इन अल अक्सा हाउ इज दैट Yeah, पॉसिबल ask them. It's marked. Shias and Sunnis have a consensus on that. I'm having an eye roll moment, but okay. Um, So my point do is, you understand Okay, do this you understand my hold on, do you understand my argument? For a Muslim, मैं समझ रही हूँ कि जो हो गया सो हो गया आगे बढ़ो बट आई थिंक नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं मेरा ये पॉइंट ही नहीं है, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम मस्जिद अल अक्सा की रेवर्ड वैल्यू देखते हैं तो वो रेवर्ड वैल्यू ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद वेंट टू अर्श फ्रॉम देयर व्हाइल no सिटिंग इन I'm just साउथ talking about अरेबिया। no I हाँ, understand the एक Miraj सेकंड मेरी पूरी बात खत्म होने दें ना प्लीज। ठीक है, ये आप एक नॉन मुस्लिम को हिस्टोरिकली कभी प्रूफ नहीं दे सकते क्योंकि फिजिकली स्पीकिंग प्रॉफिट मोहम्मद इफ अनलेस यू आर अ मुस्लिम यू विल नॉट बी एबल टू प्रूव एवर स्टेप्ड फुट इनसाइड ऑफ जेरूसलम और एनीवेयर नियर इजराइल। ठीक है, इसी लॉजिक के साथ अगर आप हिंदू पर्सपेक्टिव से देखें तो जो बाबरी मस्जिद है देव बीन फॉर एज नोन एज लॉन्ग हिस्ट्री इज रिटन क्लेम्ड के अयोध्या में एक सर्टन एरिया के ऊपर राम पैदा हुआ था, वेदर राम वहां पैदा हुआ था या नहीं उनका वहां पे claim है and that claim is much heavier than any Muslim claim on that actual place. So that अगर for example हम ये claim करके इजराइल के अंदर और दुनिया को मनवा सकते हैं in regards to that, and majority of the time in history due to whatever reasons the world has accepted that, namely Jews and Christians, that it is our third holiest place, then I think we owe it to the Hindus in those regards by respecting their beliefs compared to a Babar character who might be a very good guy or a bad guy, which is debatable. हमारे लिए उस जगह की उस लैंड की कोई इतनी बुकत नहीं है, उनके अच्छा लिए मैं बहुत ज्यादा। आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू बट शाहजी आई थिंक तुम एक बात बोल रहे हो वो जो मस्जिद अल अक्सा का जो भी सिचुएशन है वो हमें किसी ने मतलब मस्जिद अल अक्सा बन चुकी थी ठीक है मुसलमानों ने ही बनाई थी दे टुक ओवर जेरूसलम एंड दे मेड दैट मस्जिद ठीक है so automatically a masjid would be our property I mean a Jew won't go to masjid right a Hindu won't go to masjid वो तो automatically हमारी property हो जाती है ना और इसराइल और उसका जो भी सिचुएशन है अब वो मस्जिद अल अक्सा किसी और जगह पे भी बन सकती थी एंड इट स्टिल वुड हैव द सेम वैल्यू नो No, लेकिन फिर उसके बाद फिर because तो ये वाली बात हुई the value of Masjid al-Aqsa is Prophet Muhammad going on Arsh from there. That's all what the value. नहीं, अच्छा बट यहाँ पे ना वो थोड़ा सा मसला है एक मस्जिद एक अल मिनट अक्सा तो नहीं मस्जिद अल अक्सा तो बाद में नहीं उस बना मस्जिद अल-अक़सा की वो लोकेशन जो है उस वहाँ मस्जिद अल-अक़सा बनी ही इस वजह से है कि किबलातुल अव्वल उसको काउंट किया जाता है एंड दैट किबला इज फ्रॉम वेयर द प्रॉफिट वेंट ऑन अर्थ। Masjid al-Aqsa came into existence due to that belief. there was dome of rock before Masjid al-Aqsa na Medusa. Temple of Solomon. थर्ड टेम्पल There was हाँ मुझे temple पता of है Solomon as well. आई नो So अबाउट there दैट was बट our historical significance of that place for Muslims
is even before the existence of Masjid al-Aqsa due to the previous यार आपका prophets. मेन फंक्शन क्या है? मैं Is आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो आप फिर होलीज़ ऑफ द होलीज़ को क्यों नहीं क्लेम करते? ठीक है, जहाँ पे हज़रत ईसा थे, आप कनान को क्यों नहीं क्लेम करते? जहाँ पे हज़रत यूसुफ जो हैं सेटल हुए अपनी ट्राइब्स के साथ। आप फिर उस एरिया को क्यों नहीं क्लेम करते जहाँ हज़रत इब्राहीम जो थे उन्होंने कुर्बानी दी इस्माइल की। ठीक है, आप तो बाकी सब का नहीं करते। द ओनली सिग्निफिकेंस ऑफ मस्जिद अल अक्सा एंड दैट एरिया इज प्रॉफिट मोहम्मद अपॉन हिम बी पीस। हमारे नबी वहाँ से अर्श के ऊपर गए थे जो कि नॉन मुस्लिम्स के लिए बिलीफ नहीं है, और हम अच्छा, फैक्चुअली वो साबित हिस्ट्री के बेस पे नहीं कर सकते बिकॉज नहीं, फिजिकली स्पीकिंग प्रॉफिट Shaji, मोहम्मद नेवर इवन वेंट क्लोज टू इजराइल। Shaji, you are That's what comparing I was orange. thinking. Didn't it happen like in a matter of 2 seconds? Like, या like, लेकिन आप दुनिया को yeah, कैसे how अरे भाई, दुनिया we are एक नॉन comparing. मुस्लिम कैसे ये एक्सेप्ट करेगा? नॉन मुस्लिम हिस्टोरियन तो ये actually kind of कहाँ hard से to accept. I agree, Bilkul. You guys are comparing apples with oranges. नो ठीक वेयर है. नॉट। इसी तरीके से हिंदुओं का एक क्लेम है इन अ रियल वर्ल्ड व्हिच इज होलिस्टिक कि उनका राम, चाहे When हम was माने that कि वो, claim सुनो ना made? बात सुनो, चाहे राम पैदा हुआ था या नहीं पैदा हुआ था, एक लोग कह रहे हैं कि वहां पे राम पैदा हुआ था, तो उनकी रेफरेंस उस जगह के ऊपर उस पीस ऑफ लैंड पे ज्यादा हो गई या ना होगी? अच्छा, तो हमारे लिए वो आम मस्जिद है। ये जो सियालकोट में फिर जो राम तलाई है उसका क्या करना है? आपने जो करना है आप करें, मैंने आपको रोका? ये सियालकोट भी जो है वो हिंदुओं को फिर यार दिया गया. मेरा ये कंसर्न नहीं है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा नहीं, ना अब कभी आप वहां तो पे बात कर रहे हैं हमारा ना कि हमारा कोई नबी नहीं मस्जिद बाबरी के अंदर पैदा हुआ, वो हमारा तो कोई ठीक है औलिया भी नहीं मस्जिद अल बाबरी के अंदर गया। यार, कल को कहते हैं कि राम तलाई में पैदा हुए थे, फिर क्या करना है? The claim that we have on that we make on यार ये क्लेम सिड कितने साल पुरानी है आपको पता सिड है? ये हाँ, जानते हो ये सिड क्लेम कितना साल कितने पुराना साल क्लेम? पुरानी है? ये मुसलमानों के आने से भी पहले की पुरानी है। अगर आप एग्जैक्टली। देखें कि बाबर ने उस जगह पे उसके मानने वालों ने मस्जिद क्यों बनाई थी, उस टाइम से ये बला फटा चल रहा है। वो तो तब से ही कह रहे हैं कि ये हमारे राम की जगह भाई है। वाल्मीकि रामायण में मेंशन्ड है लॉर्ड रामा की बर्थ Ayodhya, अयोध्या में, हाँ. भाई, जो कि अयोध्या में हुई थी. अयोध्या एटलीस्ट अयोध्या Ayodhya, हाँ, कितनी we बड़ी all know जगह that. है? अयोध्या जो कि कितनी बड़ी 2400 जगह नहीं, साल पुरानी किताब है यार। but नहीं, मैं अयोध्या कितनी शाजी बड़ी मैं जगह तुम्हें मैं what I'm trying to say is कि I understand the fact that it's just a building, ठीक है. Even though it's a historic building and that is sad कि they had to tear it down. But you need to understand कि एक Indian Muslim जो है वो कहाँ से आता है. When they take it seriously, that is because they think this was the starting point of the erasure of their identity as Muslim in India. and Because also इसके I when can बाद फिर वो understand that. claims and किया. also I when can we are understand comparing that. लेकिन some battles you win and some battles you lose. अब अगर वो मस्जिद टूट चुकी है और उनका इतना बड़ा क्लेम है और वो सेंचुरीज ओल्ड है I और don't think इनको anybody पता is है कि claiming that ये, right now. I don't think anybody नहीं is नहीं, claiming it. आज आज But the आज feelings are ट्विटर still पे there. नहीं नहीं, आज ट्विटर के ऊपर बहुत सारे मुसलमानों के मैसेजेस हैं, आज आर्टिकल्स लिखे गए हैं, आज वेरियस सोशल मीडिया पे डिबेट्स चली हैं जहाँ पे इंडियन मुस्लिम्स और मुसलमान कुछ जो नॉन मुस्लिम जो नॉन इंडियन है पाकिस्तानी इन ओरिजिन in their major quantity and some Afghans have been basically stating कि एक दिन हम वहां पे वापस मस्जिद बनाएंगे। तो वो ठीक देखो, है, हाँ, तो वो जब दिन आएगा तो आई थिंक इन फ्यूचर जिस तरह से उन लोगों ने सेंटिमेंट हर्ट होने के ऊपर ये जगह ली है और बाबरी मस्जिद को तोड़ा है, तो अगर फ्यूचर में आई मीन अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में मुसलमानों का कंट्रोल आता है एंड दे डू द सेम थिंग, दिस विल गो ऑन. आई डोंट थिंक दिस इज एवर गोइंग टू स्टॉप. ये तो बैक टू so बैक that's my point रहेगा. कि अगर एक जगह आपके लिए एज अ रिलीजन इतनी रेवर्ड है ही नहीं और वो बिल्डिंग भी टूट चुकी है, अब उसकी इट्स कोई मोर अ गेम हिस्टोरिकल ऑफ वैल्यू ईगो. भी नहीं रह गई। इट्स मोर अ गेम हिस्टोरिकल ऑफ again ईगो. वैल्यू, again या it is तो मैं यहीं पे saying आ रहा हूँ ना, wrong एक सेकेंड things. ना यार, बारी बारी ना यार, क्या हो गया, प्रॉब्लम?
अच्छा। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो जगह हिंदुओं के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुसलमानों के लिए नहीं। दूसरी चीज़ आपने ये इस्टेब्लिश कर ली कि हिस्टोरिकल वैल्यू होनी थी, लेकिन जिस चीज़ की वैल्यू होनी थी हिस्ट्री वाइज वो चीज़ भी डिमोलिश हो गई है। तो वहाँ पे आपने क्या लेना है? आप नई मस्जिद बनाएं, किसी और जगह पे बना अगला लें जो उन्होंने जगह अलॉट की है, मूव ऑन। आई नो इट्स Shaji, हार्ड। imagine that you're talking to my great great grandchild who is a bloody general, and he's just decided कि भाई मस्जिद यहीं पे बनेगी, तो उसके साथ आप जरा बात करके देखें No, ना no, कि या no, मैं क्या it's राय not है। like सेंटिमेंट्स that. पे It's not, मैं it's not like that because सेंटिमेंट्स Shaji, एक Shaji, एक वन second. वन सेकंड, Listen लेट to मी me. जस्ट आंसर हिम। इट्स वेरी सिंपल आंसर टू दैट। आई बिलीव इन रियलिटी, अगर कल को मुसलमान पावरफुल होते हैं, और अगर मुसलमान नहीं नाज़ीज़ भी पावरफुल होते हैं, या हिंदूस इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो मक्का को भी जाके फतह कर सकते हैं, तो आप क्या ही कर लोगे? हाँ, तो फिर तो वो करेंगे ये ही क्या बात फिर है? करेंगे। हम डिस्कस नहीं नहीं हाँ, शाहजी, फिर हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं? हम हम करंट यहाँ पे मॉरल सिचुएशन को ग्राउंड डिस्कस डिस्कस कर रहे डिस्कस हैं। करेंगे ना। हम करंट अगर तो सिचुएशन को इन फेयर एनालिसिस कर रहे हैं। वो अगर आपने करना है तो वो मैंने अपना देखिए बता सिड नहीं दिया। नहीं आई सिड डोंट मैं आपको एक्सपेक्ट यू शाहजी, टू एग्री विद मी। सिड अगर मैंने सुने हम सुने अगर हम अगर हम हर बात सिड ये सुने। कह के डिसमिस कर देते हैं कि हम क्या ही कर सकते सेठ हैं, मेरे भाई मेरी बात देन सुनो, मेरी बात सुनो, सेठ मेरे भाई, बात सुनो। कल को अगर फॉर एग्जांपल मुसलमान पावरफुल हो जाता है इंडिया में, और एक हिंदू पावरफुल हो जाता है सऊदी अरेबिया में, ट्रस्ट मी, दे विल स्टिल नॉट गो। ना मुसलमान जो है राम की जन्मभूमि के नजदीक जाएगा, ना कोई हिंदू जो है काबे के नजदीक जाएगा, बिकॉज दे बोथ विल रियलाइज, दोस गवर्नमेंट विल रियलाइज कि ये जो है एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है। कोई नहीं चाहता कि अपने मुल्क में वो, अगर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है बिकॉज इट वाज ऑनेस्टली नॉट रियली अ बिग डील, लेकिन अगर तुम राम की जन्मभूमि को तोड़ोगे, दैट वुड हर्ट ऑल काइंड ऑफ हिंदूज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। ठीक है, सेम गोज फॉर काबा। अब बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, ठीक है, इंडियन मुस्लिम जो है उनकी आइडेंटिटी उससे अटैच्ड है, दे फील लाइक वायलेटेड और समथिंग। अगर काबे को हाथ लगाए किसी हिंदू ने, दैट वुड मीन वॉर अगेंस्ट ऑल मुस्लिम्स। तुम समझ रहे हो? तो ऐसी चीजों पे कभी अगर तुम्हारा ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड जो है ना जनरल बन जाए इंडिया में, वो कभी इतना स्टूपिड काम नहीं करेगा। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट। और एक थ्योरी होती है सिड भाई अंग्रेजी में, जिसे कहते हैं माइट इज राइट, कि अल्टीमेटली चलती तो उसी की है जिसके पास ताकत होती है। ठीक नहीं, है। अगर तो हम लोग ये सोच के बात कर रहे हैं ना दित्या कि भी माइट इज राइट, तो अभी वो कर लेते हैं तो बाद में वो कर लेते हैं, तो देन देयर इज नो एक्चुअली रीजन फॉर यही तो डिस्कसिंग मैं तुम्हें यार एनीथिंग। समझाना देखो चाहता हूँ। सेठ, यही तो सेठ मैं देन तुम्हें देखो, देयर इज समझा नो रहा हूँ। रीजन टू एक ये डिस्कस। तुम ये एग्जैक्टली। बात अपने पोतों को तीसरी समझाना बात देखो चाहता हूँ। तीसरी इसको बात पता देखने क्या के ना दो तरीके हैं। सेठ, इसको देखने के ना दो तरीके हैं। एक चीज ये है कि आप मॉरली एक चीज को एनालाइज करो इन टर्म्स ऑफ के अक्लमंदी की बात क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है एक प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, उसके अंदर यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट व्हाट हैपेंस। लेकिन दोनों सूरतों के अंदर अगर आप रेफरेंस को वैल्यू करोगे, तो अगर गोइंग बैक विद द जजमेंट ऑफ हजरत उमर, हु आई थिंक could have very easily gone and prayed at the holies of the holies, and we would have had the same problem here. Not only did he set a precedent over there, but he even passed a fatwa. Instead he basically said कि ये जो जगह है, ठीक है, जिस जहाँ पे थर्ड टेम्पल है, दिस इज ऑल्सो वेरी रेवर्ड फॉर द जूइश पीपल। आपने बहुत सेंचुरी से ज्यूज को यहाँ पे आने नहीं दिया, आप ज्यूज को भी आने दें। ठीक है, तो हम तो अगर इस्लामिकली देखें तो इसका वर्डिक्ट, going by what Hazrat Umar basically said, he evaluated all three religions reverence in that शादी, place। यू आर ठीक कंपेयरिंग है, मेरी थिंग्स मेरी रॉन्गली। अच्छा, काटूंगी मैं एक I एक want to say सेकंड, something else. एक Sit. यार, You, अच्छा करें sorry. आप लोग, नो प्रॉब्लम। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती थी, सेड, जितना स्ट्रांगली तुम बाबरी के बारे में फील कर रहे हो, ठीक है, डू यू आई मतलब not one Pakistani have ever mentioned about that 150-year-old mandir been teared down just because the building was not, छत गिरने की वो थी,
ठीक है, वहां पे कोई ऐसा क्लेम भी नहीं था कि यहाँ पे हमारी मस्जिद होनी चाहिए, ये हमारी किसी सूफी सरकार की वो है, पैदाइश की जगह है, कुछ क्लेम नहीं था। इट वाज जस्ट द रूफ्स वर फॉलिंग, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द रूफ्स दे डिस्ट्रॉयड द होल मंदिर। तो ऐसे में तो आई डोंट थिंक कि वी गेट टू कंप्लेन अबाउट और सिचुएशन मैंने राइट तो नाउ, वो ये जो हो हाँ, चुका अच्छा, मैंने ये एक तो पॉइंट। इन दैट केस मैं दोनों चीजों को डिफाइन करूंगा। पहली तो बात, इट्स नॉट द बाबरी मस्जिद दैट आई फील स्ट्रांगली अबाउट, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। एंड आई वाज सेइंग कि शाह जी जिस जो सा कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कंपैरिजन ही रॉन्ग है। पहली तो बात ये है कि मस्जिद अल अक्सा के बारे में जो मुसलमान कहते हैं, इट इज वेरी प्रिसाइज। क्या हिंदू कहते हैं कहते हैं बताओ, कि क्या कहते हैं? मस्जिद अल अक्सा, ये कहा जाता है ना कि मस्जिद अल अक्सा जहाँ उस जगह पे बनाई गई है जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई, ठीक है। हाँ, अब एक नॉन मुस्लिम को ये हिस्टोरिकली साबित इट्स अ करके दिखाओ। प्रिसाइज प्लेस, इट नहीं कुड नहीं, बी तुम 5 साबित करके किलोमीटर यार, भाई। प्रिसाइज इट्स एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। आप मुझे ये साबित करके दिखाओ कुरान से, हदीस से, हिस्ट्री से। आप एक नॉन मुस्लिम को ये कैसे साबित करोगे कि जिसको वो नबी नाउजुबिल्लाह नहीं मानते, वो जो इजराइल फिजिकली गए ही नहीं, ठीक है, वो वहां से जन्नत चले गए और अल्लाह से मिलके आ गए, आप ये साबित इट करो। कुड वेरी अगर वेल अच्छा, बी आप I 5 I have a किलोमीटर्स point टू to द, make, if I लेट may. लेट भाजी मी इट कुड, कंप्लीट करो। it could very well have been 5 kilometers to the west, north, east, or south. आई एम नॉट It would आस्किंग not दैट, आप ये be. पूरा वाकया ही मैं साबित करके एक नॉन मुस्लिम को दिखा दो। भाई हमारे जो उनसे हिस्ट्री के खुलफाए राशिद, पर्सपेक्टिव से आप हिस्टोरिकली ये बात साबित ही नहीं कर सकते। यू कैन अरे नॉट भाई प्रूव दैट, यू कैन नॉट उसकी प्रूव जरूरत दैट फ्रॉम नहीं द है फैकल्टी। ना। यार एक सेकंड ना यार, आप क्या कर रहे हैं सेठ साहब? आप या तो एक दफा बोल लें। आप जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो बीच में काटें ना। या तो आप कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं अच्छा या एक आप सेकेंड सिड, आप भी एक एक सेकेंड। सेकंड रुक जाए ना, मैं जरा बात कर रहा हूँ। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस आप सबको। अगर बात करनी है, ये कोई ऐसी सेंसिटिव बात है कि इसके ऊपर लोगों को, सुनने वालों को झगड़े के अंदर बहुत गलत नोशन जा सकता है, हमारे अगेंस्ट फतवे खड़े हो सकते हैं। तो लेट्स बी क्लियर अबाउट दोज थिंग्स, एंड व्हेन इट्स सेंसिटिव थोड़ा सा रुक के ठहराव के साथ बात करें। सब करें, आप पहले बात कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेठ आप बात करें, फिर माहम आप बात करें। नहीं नहीं, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आप बात कर लें तो सिड बात कर लें, बट या ओके। तो आप यू कैन कंटिन्यू शाहजी, सिड फिर ही विल कम इन लेटर। देखें, सिंपल सी बात है, आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई कट ऑफ ना करे, क्योंकि मैं अपने अगेंस्ट फतवा नहीं चाहता कि मेरी बात कंप्लीट ना हो और उसके बाद ये हो सकता है, और ना मैं आप लोगों के अगेंस्ट चाहता हूँ। सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स व्हेन वी स्पीक अबाउट दैम, because we are on the side of our iman, and on top of that our people. अब मैं आपसे एक सेंसिटिव बात का क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप हिस्टोरिकली एक नॉन मुस्लिम को यूजिंग द फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, सेठ साहब कैसे साबित करेंगे कि मस्जिद उल अक्सा वो जगह है, या ये वाकया जो मेराज का था ये एग्जिस्ट भी करता था टू अ नॉन मुस्लिम? करेक्ट। शाहजी, the discussion that we're having does not require that. Oh yes it does, Mm, and how I'll does tell you that why। require? आप साबित करें प्लीज। नहीं, मैं ये अब वो लोकेशन साबित करने के लिए मैं वो आराम से कह सकता हूँ, खुलफा राशिदीन में से एक ने इस जगह को वेट किया, ठीक है, लिहाजा दिस इज द प्लेस। उस खुलफा राशिदीन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेट किया हुआ है, लिहाजा वी हमारी हुज्जत तमाम हो जाती है। यार मैंने आपसे, आप फिर मेरे क्वेश्चन पे गौर करें। मैंने आपको कहा आप एक नॉन मुस्लिम को ये साबित करें। नॉन मुस्लिम को हिस्ट्री के साथ जिसका ये बिलीफ नहीं है, मे बी तो हुज्जत तमाम हुई हुई है, आपकी भी हुज्जत तमाम हुई हुई है, माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। आप ये बताएं कि आप एक नॉन मुस्लिम को हिस्ट्री से ये कैसे साबित करें, बताएं। आई एम नॉन लिसनिंग। मुस्लिम को हम इससे
क्यों साबित कर रहे हैं ये? अच्छा, मेरिट कल से को ये मैं कोर्ट केस इसराइल के अंदर चला जाता है, इसी तरह इंडिया की तरह, तो वहाँ पे तो आपको अगर आप इस चीज़ को वैल्यू नहीं देते कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ एन अडोन्स टू दैट बिलीफ, तो आपके पास कोई केस ही नहीं। Shaji, अच्छा, at least सुने from सिड, within our religion, we're not we talking about have our the religion। argument तो of इस the तरह तो claim. हिंदू भी कह सकते हैं। अब मैं आपसे एग्री करता हूँ। I understand your sentiments and my belief is exactly the same as yours। ठीक है। अब बात क्या है इसके अंदर कि जब आप हिंदुओं को जरा आप कैप चेंज करें, मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज जिस तरह हम बिलीव करते हैं और हमारी हुज्जत तमाम हुई हुई है, उनकी भी हुज्जत तमाम हुई हुई है कि On the राम basis of मंदिर वाली जगह, राम जन्मभूमि जो है वो बाबरी मस्जिद के अंदर है, एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम। ठीक है, उसी जगह के ऊपर है। अब जिस तरह हम नहीं साबित कर सकते एक नॉन मुस्लिम को और हमारी हुज्जत तमाम हुई हुई है, उनकी भी हुज्जत तमाम हुई हुई है, और द डिफरेंस इज इट्स अ डिफरेंट रिलीजन। थैंक यू वेरी और मच। ओके, सिड आई भाई, हैव अ पॉइंट टू मेक। आदित्य, एक सेकेंड 10 प्लीज। सेकेंड्स और कानवर से 10 चलें सेकेंड्स। जी जी। जिस तरीके से सिड भाई आप जितना हर्ट फील कर रहे हो और आप कह रहे हो मेरे पोते पोती जो भी पैदा होंगे कल को वो ये क्यों नहीं करेंगे, मैंने एक आर्टिकल लगाया चैट पे, ये 1992 का आर्टिकल है, आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स का। जब इंडिया में बाबरी मस्जिद जो है वो शहीद की जाती है, पाकिस्तान के अंदर 30 मंदिरों पे जो है हमले किए जाते हैं। जी जी। तो अगर हम इसी स्पाइरल होल में अगर हम जाते रहेंगे कि सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, आपने ये किया, तो भाई हमारा तो इंडिया हिंदुस्तान देश है, पाकिस्तान तो आपका देश है ना यार। आपने तो अपनी माइनॉरिटी सेव करनी थी, सिक्योर करनी थी। एक एक मंदिर के बदले, सॉरी, एक मस्जिद के बदले 30 हिंदू मंदिरों पर अटैक किया जाता है। अगर मैं भी आपकी आर्ग्यूमेंट से आगे बढ़ता रहूं कि इस यही आर्गुमेंट लेके हम आगे बढ़ते रहते हैं, तो फिर दे विल नेवर बी पीस। यू गेट माय पॉइंट? अच्छा, भाई आदित्य, आई मैं आई भी आई हैव हाँ, यार सिड, एक सेकंड प्लीज, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। लाइक ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 15th सेंचुरी में या 16th सेंचुरी में ये बाबरी मस्जिद बनी है, 15, 20, 30 में। ठीक है, आई गेस। तो जहाँ पे ये लोकेशन जिस स्क्रिप्चर में आप की आइडेंटिफाई होती है, दैट इज रमायना रमानिया करके, रामायण, जी जी, वाल्मीकि रामायणा। रामायण, हाँ, एंड वाल्मीकि रामायण। लाइक उसकी रामायण। क्रोनोलॉजिकली कितना ओल्ड है वो? एटलीस्ट 2400 ईयर्स रिटन, और लोग कुछ ठीक है, कहते हैं उससे पहले ओरल ट्रेडिशन था, तो इट कुड बी अराउंड 3000 ईयर्स ओल्ड। 3000 ईयर्स। ठीक है, ठीक है। तो उसमें दे डोंट स्पेसिफाई एग्जैक्ट लोकेशन, आई थिंक, इफ आई एम करेक्ट। दे से इट्स हाँ, मतलब इट्स इन राइट ने। अयोध्या, वी नो द हाँ सिटी, हाँ वी हाँ डोंट नो हाँ, द सिटी का एग्जैक्ट पता, लोकेशन। जी 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 जी। ये जब उस टाइम पे बनी, और उसके बाद पहला क्लेम कब आया था कि बाबरी मस्जिद की जगह पे राम टेम्पल है? पहला क्लेम कब इट आया था? देखे, अयोध्या में है, ये बातें तो पहले भी नहीं नहीं, चलती क्लेम थी। के नहीं, वो तो है। मैं आपको बताता हूँ मैं ना, मैं शाहजी, आपको लेट मी बताता शाहजी लेट मी हूँ। आपने कंप्लीट। क्वेश्चन किया है, मैं शाहजी, उसका पहले मैं, क्लेम की डेट बताने लगा हूँ। जी 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 जी, पहला क्लेम इस जगह को चूज ही इस वजह से, अगर आप बैकग्राउंड के अंदर जाते हैं, किया गया था बिकॉज उस जगह के ऊपर बार बार हिंदूज जाते थे। इट वॉज टू रिमूव दैट कंटेंशन। उस एरिया के अंदर मुसलमान हो चुके थे अयोध्या में कुछ लोग, एंड द हिंदूज वर, जब मुसलमानों की वहाँ पे हुकूमत आई, वो उस जगह के ऊपर इस्लाम फैलाना चाहते थे, एंड दैट इज व्हाई दैट मॉस्क वाज in a contended area, point of contention created by Babar's adversaries, not Babar himself. ये शुरू से ही क्लेम जी है। जी जी, ये शाहजी, दिस इज ऑल राइट, ठीक है। द फर्स्ट क्लेम जो आया था कि इधर राम का के बेसिकली बर्थ प्लेस है, दैट वाज 300 years आफ्टर दिस मॉस्क वाज बिल्ट, जो डॉक्यूमेंटेड है हिस्टोरिकली। इट वाज 1850 समथिंग व्हेन द फर्स्ट क्लेम डॉक्यूमेंटेड, इनके एग्जैक्ट है, उसने क्लेम किया था।
after 300 years. There are certain writings and discussions on that case में ब्रिटिश का भी रोल हो सकता है to promote communal disharmony or violence whatever. मेरा कहने का मकसद ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो शाह का भी पॉइंट था, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश कि कौन कहाँ किस तरह होता है इन हिस्टोरिकल या एकेडमिक या कोर्ट ऑफ लॉ। इधर जब आप जाते हो तो ये जो पॉइंट इनका है कि कब क्लेम आया, बहुत लोगों को मसला हो जाएगा, बहुत रिलीजन्स को मसला हो जाएगा, बहुत सी चीजें एकेडमिकली फिर फुरकान भाई इसमें क्लेम में ये भी आर्गुमेंट आ सकती है कि अंडर द मुगल रूल दे कुडंट हैव प्रोटेस्टेड, बट दैट कहता ना वो भावना, वो आर्गुमेंट एग्जिस्ट करती थी, बट पीपल वर नॉट वोकल बिकॉज ऑफ द मुगल रूल, सो यू कैन मेक एनी क्लेम फ्रॉम एनी साइड यू वांट टू। बट डॉक्यूमेंटेशन होती है उन चीजों की, जिस तरह शाहजी एक सेट, मैं बहुत देर से चुप बैठा हूँ, जिस तरह शाहजी एक इंसिडेंट कह रहे थे जो हजरत उमर का था व्हेन ही वाज एंटरिंग जेरूसलम। इट वाज अ एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं इधर नहीं करूंगा प्रे, ताकि लाइक इट टर्न्स इनटू अ मॉस्क, बाद की जनरेशन इसे मॉस्क ना बना दें। तो लाइक इट वाज अ एस्टैब्लिश्ड थिंग। उधर कुछ एस्टैब्लिश था एज अ बर्थ प्लेस ऑफ राम? नहीं जी, वहां पे हर साल लोग आते थे, वहां पे लोग हर आते साल थे, लोग आते होंगे, वहां पे मंदिर भी था, ठीक है, हो अकॉर्डिंग सकता टू है। हिंदूज वहां पे मंदिर भी था, और जब स्ट्रक्चर उन्होंने उतारा है तो नीचे मंदिर भी निकला है। द पॉइंट ओवर हियर इज कि टुडे एंड सिंस द हिस्ट्री इज रिटन majority of, ये मेरा ओपिनियन है, यू डोंट हैव टू एग्री विद इट, आई जस्ट थिंक यू हैव टू गिव सम वैल्यू टू हिंदूज एज वेल इन टर्म्स ऑफ व्हाट देयर बिलीफ इज। अगर वो समझते हैं उनका इतना बड़ा बंदा वहां पे वो मिथिकल था, मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि राम एग्जिस्ट करता था, दैट्स अनदर स्टोरी फॉर अनदर डे, ठीक है। लेकिन अगर हिंदूज आज एग्जिस्ट करते हैं, दे बिलीव के राम एग्जिस्ट करता था और वो वहां पे पैदा हुआ है, एंड फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम दे हैव बीन स्टेटिंग दैट, देन दैट हैज मोर वैल्यू देन द मुस्लिम क्लेम। कुछ नहीं ऐसा मुसलमानों का वहां पे हुआ, एंड दैट बिल्डिंग वुड हैव बीन सिग्निफिकेंट, बट इवन दैट इज डिस्ट्रॉयड। चले अब मैं जरा कंप्लीट कर लूं आदित्य। जब बनी है फर्स्ट क्लेम आफ्टर 300 इयर्स आए, जो आपका स्क्रिप्चर है उसमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, क्योंकि वी नीड टू गेट दीज फैक्ट्स स्ट्रेट। उधर स्ट्रक्चर है जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में भी आया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी साइट कर रहा है। वेदर इट्स हिंदू टेम्पल, अगेन अ क्वेश्चन मार्क अराइजेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी लैंग्वेज यूज कर रहा है पॉसिबली की, ठीक है। उसके बाद क्लेम आहिस्ता आहिस्ता हुए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर क्लेम हुए हैं, बट फिर जब ये एल के अडवाणी आई गेस, उन्होंने ये मूवमेंट जरा इसे पुश किया है इन द 80s आई गेस, और जिसकी वजह से वो आपका जो वर्शिप वाला एक्ट आया प्रोटेक्शन का, बट उसने इस स्पेसिफिक डिस्प्यूट पे इसे कहा था कि ये अंडर द कन्फाइंस ऑफ द एक्ट नहीं आता, और इस पे जज Because नहीं it किया was गया already सुप्रीम कोर्ट में। demolished. The act was नो passed नो नो after नो the नो 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 demolition. नो 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 91 में एक्ट आया, 92 में डिमोलिश हुई है। 91 में एक्ट आया, 92 में डिमोलिश हुई है, ठीक है। तो उसमें भी ये अंडर द कन्फाइंस ऑफ दैट एक्ट नहीं आया था, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसिडर नहीं किया था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत सी चीजें हैं जिसे हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं इस्टेब्लिश कर सके, और हिंदूज नहीं कर सके अपने ही इंडिया में कोर्ट ऑफ लॉ में, कि ये स्ट्रक्चर था। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, दे couldn't basically do that, and by the same logic we won't be able to do a lot of things as Muslims to basically establish, जो कि शाह का पॉइंट है, सेंटिमेंट्स की इधर गेम आती है। तो और जब एक डिस्प्यूट आ गया है, उसे रिजॉल्व कैसे करना है, एंड आई थिंक दिस वाज द ओनली लॉजिकल सॉल्यूशन जो कि मुझे नजर आता है, जो कि हो सकता था। अदरवाइज मुस्लिम्स एग्री क्यों करते, अपील करते, दोबारा नहीं की 2019 में। जी थैंक यू। अच्छा मैं एक अच्छा, आई आखिरी जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू गाइस कि हमारे पास आई थिंक कोई 22 मिनट्स रहते हैं, सो वी आर गोइंग टू बी रैपिंग अप, सो आई गेस इट्स टाइम फॉर योर फाइनल स्टेटमेंट्स इफ यू वांट टू गिव सम। अच्छा मैं एक फाइनल स्टेटमेंट पहले तो इस पे दे देता हूँ कि द आर्गुमेंट अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ लॉर्ड रामा, तो देखें जो 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 रोमन्स थे
या वो लोग जो है ना, वो बहुत एक्सटेंसिवली जो है वो अपनी हिस्ट्री को लिखते थे। दे लव्ड राइटिंग, राइट? तो वो हर चीज के बारे में बहुत कुछ लिखते थे। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कल्चर था, इट वाज मोर ऑफ अ फॉल्कलोर। यहाँ पे चीजें ग्लोरीफाई करके लिखी जाती थी, ठीक है, ताकि जो रूलर होता था, हाउ लाइक ग्रैंड्योर दिखाने के लिए कि हाउ ग्रेट दे वर। तो आई थिंक पॉसिबली my understand is a king could have existed by this name and with this family, but the stories around him and that that larger than life characterization of that person existing was glorified by their courtyard people, by the people who used to write दैट टाइम। तो मेरी आर्गुमेंट ये है कि यार, ऑफ कोर्स हर जगह किंग्स और क्वींस होती थी, उस टाइम भी होती थी, ठीक है। जो आर्यंस आए थे वो एक बहुत ही पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। आर्यंस अराउंड 3200-3300 साल पहले आए थे, और ये महाभारत और रामायण दोनों जो है, जो स्टोरीज जो है, ये आर्यंस की लिखी हुई है। तो वो थे, उनके अंदर जो है वो घोड़े भी चलाते थे, वो रूलिंग क्लास भी थे। तो ऐसी ऐसे जो है किंग्स हो सकता है एग्जिस्ट करते हो पॉसिबली, और उनकी जो है ग्लोरीफाई करके जो है ये सारी चीजें जो है बताई गई हूँ कि हाउ कितने महान थे वो, हाउ ग्लोरियस दे वर। सो बट स्टिल it doesn't make any sense, so you can argue from whichever side you want. I don't believe in whatever किसी भी तरीके के जादू टोना या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कोई उड़ सकता है या फिर ये सारी चीजों में विश्वास नहीं करता। तो मुझे लगता है ये ग्लोरीफाई की गई है ये सारी चीजें। हाँ, ऐसा कोई किंग एग्जिस्ट करता होगा जिसको जो है ग्लोरीफाई करने के लिए स्टोरीज लिखी गई है, पॉसिबली हो सकता है ऐसा कोई किंग हो, बट इट डजेंट मैटर। द पॉइंट इज कि 2400 years ago at least we have proof, like historic proof from 2400 years ago of existence of this family, royal family, which was written down 2400 years ago. And some people claim, since Hindu traditions were orally transmitted by the Brahmins, so it could have existed at least 2800, 2900 years ago also. From what the researchers, even the Western researchers agree, कि how old this civilization could have been, even by looking at कौन सी चीजें mentioned है, कि chariots है या नहीं है इसके अंदर, या फिर कौन सी जो है वॉरफेयर की क्या चीजें यूज की गई है, व्हील क्या है नहीं है। तो इन चीजों से पता चलता है कि स्टोरीज कितनी पुरानी हो सकती है रिलेटिंग टू द हिस्ट्री। तो हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि ये 2500 से 3000 साल के बीच की स्टोरीज है ये। तो तब से ये आर्ग्यूमेंट तो एग्जिस्ट करती है इस फैमिली की। बाकी जो है लेट्स सी, मतलब जो हुआ वो हुआ। अब हिस्ट्री के आगे जो है हम जा नहीं सकते। बाकी यही, आई थिंक इट वाज अ वेरी ग्रेट डिस्कशन अकॉर्डिंग टू मी। Gee, I think we should move towards the closing remarks. Shaji, if you would go ahead and give your closing statement and thoughts on today's Let's say discussion. then you go yourself. I'm just going to. Okay, Sid? Yes, in our closing remarks, I would like to say that, uh, like the Muslims have a specific place, at least in our books, in regard to Masjid al-Aqsa, uh, Hindus in their scriptures do not have that. All that they are saying is that Ram was born in Ayodhya. The location is not prescribed anywhere. There is no religious argument from the Hindus that this particular place where Babri Masjid was built is the place where Ram was born. 200 years from now, there can very well be a great politician in India whose name is, let's suppose, Shankaracharya, who's also a Brahmin Pandit, and he says, I did some calculations and we, did a little bit of mistakes, and Ram was actually not born at that particular place. He was born in the place which we gave to the Muslims to build the different mosque. So what are we gonna go do then? We have to But for understand that that claim, you'll need some kind of written evidence or any kind of even a practice it where is people go and Shankaracharya. He call. can do anything. I mean,
if you can say that that is where the temple was, you can very well say that that is where the temple was again. What's But stopping now we have anybody? a very rich history of writing down things. We have internet, we have books, and we have a very well, like, culture of documenting things. So, like, you can't make the same argument about, like, future. It didn't stop you the first time. You didn't have anything the first ठीक है time. भाई, हाँ तोड़ दिया यार, अब बता क्या करेगा. तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि it was like Maham said, more about destroying uh, the Muslim presence. Uh, it was not exactly like Al-Aqsa for even for the Hindus. They can very well make another claim any other day. Nobody's even in their scriptures capable of stopping them or putting anything or to halt on their. I mean, the only limitation that they have got is that they have to stay in Ayodhya, which I can agree with. It is written down and very well stated. And Ram was born in Ayodhya. We can't dispute that. That would that would be my closing statement. Aditya, would you like to make a closing statement? So my understanding is that, like Shah said, like I agree with the verdict now that, if it's about, like, your sentiments, and now that the mosque has already been demolished, if somebody claims that, why don't build a mosque over it? So let's give it, like, as a goodwill gesture, like, if Muslims think that it's not that important now that it's already demolished, not that you can demolish it, now that it's already demolished, as a goodwill gesture, like, give it to the Hindus, and, like, go for a better, like, peaceful coexistence. कहते हैं ना, वो बड़ा दिल करके जो है आप अपनी तरफ से एक जेस्चर दिखाओ, हो सकता है आगे जो है हिंदूज क्या कहते हैं उसे, रेसिप्रिएट करें. सॉरी, वो वर्ड स्लिप हो रहा है. Reciprocate. I understand. लेकिन आदित्य भाई आप तो मस्जिद लेते ही जा रहे हो. पहले बाबरी, फिर ज्ञानवापी, एंड में जाओगे काबा तक, है ना? काबा तो देखो, आपको पता है उसमें शिवलिंग है, तो वो लेना जरूरी है. राइट. ठीक ठीक. Who's next? I'll go अच्छा, next. कोई जी एक जी सेकंड, अच्छा. 10 सेकंड से कोई भाई ब्लास्फेमी वगैरह मत लगा देना. इट वाज जस्ट अ जोक. आई डोंट बिलीव इन द काबा स्टोरी, मैन, प्लीज. आई रिस्पेक्ट ऑल Oh, रिलीजन. we know. We know. Okay, अच्छा, go on, so I'll Farhan. make a very brief statement, and I think I agree to the opening point that Aditya made. I agree to the verdict of the Supreme Court जो 2019 में उन्होंने किया. This was the only way this dispute could have been resolved, जिसकी वजह से बहुत से लोग मरे during the communal violence जो कि शुरू हुआ after the demolition. एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट हुआ मुस्लिम्स के अंदर. एक हेट का सेंटिमेंट हुआ मुस्लिम्स के अंदर अगेंस्ट हिंदूज. हिंदू राइट विंग ने इस मुद्दे को यूज करके अपनी पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग की. थोड़ी पोलराइज सोसाइटी हो गई थी. And I think that this was the only sane way to sort of resolve the dispute. और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि जो मुस्लिम साइड थी they never appealed against this decision, and they wholeheartedly or half-heartedly or whatever the reason might be, they accepted the decision. Thank you very much. So, chalo, it's my turn. I guess I think if they wanted to make both वो जो भी हुआ उस टाइम पे, they could have turned Babri Masjid into a heritage kind of space. They could have just said that, you know what, it's not a masjid anymore. It's a historic place and we're going to use it as a cultural thing, right? You cannot pray, no one can pray there. ठीक है? They could have done that, right? But they didn't do that. It's instead, मतलब इतने हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग जो है इतना वो हो गए हैं कि ये लोग, इन लोगों को वैल्यू ही नहीं है कि
कल्चरल एक हेरिटेज है, ठीक है, मतलब पुरानी एक बिल्डिंग है। यूरोप में जाओ तो पिछले 200 साल से जो बिल्डिंग्स खड़ी वैसी खड़ी है। इन यूके दे डोंट इवन लेट यू चेंज द आउटसाइड ऑफ अ बिल्डिंग, राइट, बिकॉज इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर कल्चर। हमारे यहाँ तो बस मौका मिलता है 150 साल की हिंदू की मंदिर गिरा दो क्योंकि छत सही काम नहीं कर रही, और वहां पे बाबरी उड़ा दो क्योंकि हमें लगता है कि राम यहाँ पे पैदा हुआ है। हर किसी की अपनी मर्जी है, लेकिन they're not doing anyone any good, ठीक है, they're just destroying their own culture. In future there will be a point where people will not care कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, and they will look back and they will say okay, we destroyed a cultural situation here, and Ram Mandir will always be a new building. तो अगर हम 1000 साल बाद का इंतजार करेंगे तो हाँ, तब राम मंदिर विल हैव सम ऑफ द हेरिटेज वैल्यू। लेकिन मंदिर तो यार कितने मंदिर हैं इंडिया में? 10,000 तो होंगे ठीक ठाक मंदिर। जिस तरह से पाकिस्तान के हर एक कोने में 4 गज की मस्जिद बनी हुई है, इंडिया में भी हर कोने में 4 गज का मंदिर बना ही होगा, है ना? तो वो ये कहना कि यहाँ पे वो पैदा हुआ तो हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, दैट इज जस्ट वियर्ड। उसकी बर्थ प्लेस है, व्हाई आर यू मेकिंग मंदिर ऑन इट? Does that make sense to anyone? It doesn't make sense to me. But subcontinent ke log, people need to stop destroying their heritage. It's there. It might not be related to your religion and everything. That does not mean you destroy it. But I guess that's it. That's all I wanted to say. Thank you for listening to us, whoever was listening. Thank you for coming over and speaking on the topic. And subscribe to our channel. Press the bell button so that you get regular update about the discussions that we're going to have, which happens like twice in a week. And thank you for supporting us. And that's it. We're gonna end this session. Khuda Hafiz. Goodbye. And how do you say it in Hindi, Aditya? How would a Hindu say it? Namaskar. We'll just namaskar. Namaskar. Yeah, I guess. Okay. See you, everyone.